एक शॉर्ट स्टोरी आपके सामने रखा गया कि एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले सर जॉन डाल्टन ने 1804 में प्रपोज्ड किया था, और उनका एक पॉइंट कि एटम इज अनडिवाइडेड या इनडिविजिबल, वो 1900 में आकर के जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन का खोज किया तो वो डिस्कार्ड हो गया। लेकिन बाकी जो उनके प्रपोजिशंस थे वो एज इट इज रहे, मीन्स एटम इज न्यूट्रल। एटम इज न्यूट्रल एंड स्टेबल कंसेप्ट लेकर के फिर पॉजिटिव सेंटर के खोज में सर रदरफोर्ड ने 1911 में अल्फा स्कैटरिंग के थ्रू ये पाया कि एटम के केंद्र में पॉजिटिव चार्ज है, जिसको उन्होंने नाम न्यूक्लियस दिया, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पर बोर ने ऑब्जेक्शन लगाया, जिसको बोर ऑब्जेक्शन नाम से जानते हैं, कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देगा एज पर दी मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअस एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसका एनर्जी कम होगा, ऑर्बिट का रेडियस लगातार कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ के साथ साथ घटते हुए रेडियस पर भी गति करेगा, एंड दैट इज स्पाइरल ऑर्बिट। इफ इट इज सो, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके मिल जाएगा, जिससे एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो बोर ऑब्जेक्शन को खुद बोर ने सॉल्व किया by making some hypothesis, that is Bohr's hypothesis, and then it is termed as Bohr's model, Bohr's atomic model. तो इस शॉर्ट में जो डिस्कस किया गया उसमें से यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। If you have any query, any doubts, then you may ask. Otherwise, I will start the Bohr's atomic model. कोई प्रॉब्लम नहीं? No study, no problem. Yes, sir. Good. So let us see. Bohr's atomic model. In order to explain the various experimental facts like spectral lines of hydrogen atom and others, Niels Bohr proposed certain hypothesis known as the Bohr's hypothesis.
are postulates. The first is the electron revolve around the nucleus in circular orbit. Circular orbit. The second one is the orbit is stationary and non-radiating. Stationary and non-radiative. Third, the angular momentum of electron in the circulating orbit is constant and equal to the integral multiple of h cross, that is mvr is equal to n into h cross, that is n into h upon 2 pi, where m mass of electron, v velocity of electron in the orbit, r radius of circulating orbit, h is Planck's constants. H is Planck's constant. So this one is basic law of conservation of angular momentum, and the same law is also valid for the planetary bodies, as it was proposed in case of Earth with respect to Sun by Kepler's. So Kepler's law. So similar. And the last one is fourth is the exchange of energy takes place only when there is jump of the electron from one orbit to another orbit. That is E2 minus E1 is equal to h nu, where E1 and E2 be the
energies of the orbits. In these two energies, if E2 is greater than E1, if E2 is greater than E1, E2 is greater than E1, that is high energy to low energy. Something like this, it is E2 and here it is E1. So this jump gives the emission. If E2 is greater than E1, then there is a emission. And E1 is greater than E2, then it is absorption. Then it is absorption. Means the energy is something like absorb the spectral lines from the incident light, and that line is absent in the output. So there is a line in input, but there is no line in output. It means that particular corresponding light wavelength is absorbed by the atom during the transition from lower state to higher state, right? So if E2 is greater, then you can say higher energy state. You can say higher energy state. So there are two types of spectral lines, emission spectral lines and absorption spectral lines. When it will be emission and when it will be absorption, this depends upon the amount of energy of these two lines. So these are the four hypotheses or postulates. You can have many more postulates on the basis of these four postulates for the explanation. For the explanation means when you are going to analyze. Now on the basis of these postulates, Bohr derive various formulae, because that has to be verified the experimental facts. So for verification of experimental facts, he derived some formulae regarding the radius, regarding the velocity, regarding the energy. So for that we consider like this. In this diagram, we have shown the nucleus which is positively charged and electron as a negatively charged particle. So let the M, V and R be the mass, velocity and radius of the electron in the atom as shown in the figure. So electron is moving around the nucleus, circulating, and here it is the positive charge. If we are not fixing a particular
atom, so we can say there is a Z, atomic number. So the charge positive is Ze on the nucleus. So nucleus is positive charge and electron is negative charge. In between these two, nucleus and electrons, there are force of attraction stated according to the Coulomb's law. So from Coulomb's law, for Coulomb's law of attraction, the attractive force FCOU is minus ZE square 4 pi epsilon 0 R square. Q1 Q2 upon R square. K Q1 Q2. K is 1 upon 4 pi epsilon 0. So according to this Coulomb's law, this one is equation 1 and this negative sign show the attractive force. This is attractive. So one of the force is attraction, force of attraction, that is FCOU Coulombs. This attractive force is balanced by centrifugal force. So there is one force which is, say, opposite to that. The Coulomb's attractive force is balanced by the centrifugal force arising by the centripetal force, that is Fc is mv squared by r, centripetal force. Centripetal force, if the mass is m, velocity is v, radius is r. So this centripetal force is mv square over r. But this force is centrifugal, that is away from the center. So therefore a negative sign. This negative sign indicates about the force is centrifugal, right? So this is equation number 2. From equations 1 and 2, we have, that is minus ZE square upon 4 pi epsilon 0 R square is equal to minus mv square over r. Minus mv square over r. So r, you can simplify this equation by cancelling this r by r square. So and arrange these terms for the radius r. So this r is, that is z square upon 4 pi epsilon 0 r is equal to mv square. So what is r? R is equal to ZE square upon 4 pi epsilon 0 mv square. 4 pi epsilon 0 mv square. This is one expression
The another expression is regarding the equation of angular momentum. That is m v r is equal to n h over 2 pi. m v r is equal to n h over 2 pi. You square this equation. That is r m square v square r square is equal to n square h square upon 4 pi square. This is equation number 3 and here equation number 4. Equation number 4. So, if you divide this equation, mv square over r divided by m square v square r square, mv square r is, this is z e square upon 4 pi epsilon 0 r square, and mv square r is n square h square upon 4 pi square. So this r square cancel, this v square cancel, this mass is cancelled. So you have 1 upon Rm is equal to Z E square into this pi also cancel, this 4 cancel, Z square upon N square H square epsilon 0. Or this R is equal to N square H square epsilon 0 upon M Z E square. This is equation number 5. This is equation number 5, which is the equation of radius. इक्वेशन 5 को ध्यान से देखिए तो for a particular atom all these parameters are constant for a particular atom, and if you keep that particular atom is hydrogen. So for hydrogen, Z is equal to 1, N is equal to 1. So the expression will be H square into epsilon 0 upon M E square. है ना? So for the particular atom, say hydrogen, Z is equal to 1 and N is equal to 1. The expression for radius is R
R is equal to H square epsilon 0 m into E square. You know very well, H is equal to 6 into 6, 3 into 10 to the power minus 34 joule second. Epsilon is 8.86 into 10 to the power minus 12. M is 9.1 10 to the power minus 31. E is 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb. Coulomb, kg, and this is farad meter, this Q, Coulomb. So putting these values, we have R is equal to 6.63 into 10 to the power minus 34 whole square into 8.86 into 10 to the power minus 12 upon mass 9.1 10 to the power minus 31 into 1.6 10 to the power minus 19 square. If you solve this equation, then this is 0.53 into 10 to the power minus 10 meter. That is R. And this can be written as 0.53 angstrom unit, R. And this is the smallest radius. This is the smallest radius and then this denoted at R0. Smallest radius, that's why it is denoted by R0, yeah, R of hydrogen, and this is 0.53 angstrom. Means you have this hydrogen atom, this is the nucleus and here it is the electron. So radius is 0.53 angstrom. And what is diameter? 1.06 angstrom is the diameter. 1.06. Now a simple question. In the series of electromagnetic spectrum, which wave has the wavelength, that is the order of 1.06 angstrom. ऐसा कौन सा वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जिसका वेवलेंथ का ऑर्डर ये डायमीटर के ऑर्डर के बराबर होता है? वेवलेंथ इस डायमीटर के बराबर हो, उस वेव का नाम क्या है? सब जानते हैं यहां. Each and every student has the information, and that is X-ray. X-ray का वेवलेंथ कितना होता है? 1 angstrom. ये क्या है? 1.06.
1.06 इज इक्वल टू 1। तो एक्सरे के लिए हाइड्रोजन एटम और ऑर्डिनरी लाइट के लिए हाइड्रोजन एटम दोनों के लिए हाइड्रोजन एटम अलग अलग दिखता है। कैसे? ये हम एक ही मटेरियल का दो डायग्राम बना दिए, एक ही मटेरियल का। एक के द्वारा हम एक्सरे डाल रहे हैं, एक्सरे, और दूसरे में लाइट है, विजिबल लाइट। तो एक्सरे का जो वेवलेंथ होगा वो इस तरह से होगा। एक जो एटम का डायमीटर है ना, एक एटम है, इसका डायमीटर है, तो इस तरह से होगा। ठीक है, एक डायमीटर को क्रॉस करने में एक वेव लग जाएगा। तो इस यहां भी ऐसे ही। ठीक है, लेकिन यदि हम लाइट की बात करें तो लाइट का वेवलेंथ कितना है? मान लीजिए 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो 6000 एंगस्ट्रॉम का मतलब कि यहां से लेकर के ये मान लीजिए 6000, तो 6000 वेव लेंथ को कितने हाइड्रोजन सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होंगे? 6000। अप्रोक्सीमेटली यहां से हम ये कर दें तो ये संख्या कितना हो जाएगा? दिस n इज इक्वल टू 6000। 6000 हाइड्रोजन एटम को ऐसे ऐसे बैठा दीजिए तो एक वेव जो है 6000 का कंसीडर होगा। इस फंडामेंटल टेक्निक से क्या रिजल्ट निकलता है? बहुत इंपॉर्टेंट, वो है, फिजिक्स में भी यूज होता है, मैथमेटिक्स में भी यूज होता है, डिस्क्रीटनेस ऑफ मटेरियल। डिस्क्रीटनेस मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, डिस्क्रीट नंबर्स। तो डिस्क्रीटनेस क्या है? जो इन्वेस्टिगेटिंग है उसका वेवलेंथ एटम के डायमीटर के बराबर होगा, तो वो मटेरियल उस वेव के लिए डिस्क्रीट होगा, अलग अलग। और जो ज्यादा होगा वो उस वेव के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब कि when lambda is equal to diameter x-ray के लिए, then this is the discrete material, and when lambda is very very large than diameter, it is the continuous material. बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मटेरियल डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूअस है, किस आधार पर आप क्लासिफाई करेंगे? तो दैट विल डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टिगेटिंग वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे यूज करते हैं, और इसके आधार पर अब आप यदि अपना एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करिए कि किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ, किसी का कुछ फ्रैक्चर हुआ, तो उसका एक्सरे कराते हैं, है ना? उसका आंसर फिजिक्स के थ्रू आप यहां से ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कामों में, मेडिकल डायग्नोस्टिक में, मटेरियल डायग्नोस्टिक में, लावे स्पेक्ट्रोमीटर, नए नए मटेरियल्स, नए नए कंपाउंड जब बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करने के लिए एक्सरे का यूज करते हैं। एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज द वेवलेंथ, और उस वेवलेंथ से ये होता है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट,
that is the radius of the material. Second is velocity. So you can use any one expression for velocity. वेलोसिटी को डिटरमाइन करना है तो इवन mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई, इसी से वेलोसिटी निकल जाएगा. कैसे? फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम we have mvr is equal to nh upon 2 pi, है ना? ये आपके पास एक्सप्रेशन है. तो व्हाट इज वेलोसिटी? दिस वेलोसिटी इज r n h upon 2 pi mr, और r की वैल्यू है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपान m z e स्क्वायर. तो रख दीजिए n h अपान 2 पाई m n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 m z e स्क्वायर. तो दिस स्क्वायर टर्म कैंसिल, this mass is cancelled, so this velocity is z e square upon 2 pi, this is 2 pi n h epsilon 0 is the velocity. This is the velocity. Again, for this velocity, if you put the value of z or n as 1, so that case will be for hydrogen atom, है ना? And this type of question is used to ask in your examination for the numerical. So this is the numerical part as well. Find out the velocity, find out the radius of hydrogen atom. The parameters are given. ठीक है? So both parallel, numerical and theory, both are going together. So for hydrogen atom, what are the constant? Z is equal to 1, E is 1.6 10 to the power minus 19 Coulomb, N is equal to 1, H is the Planck constant, that is 6.63 into 10 to the power minus 34 Joule second, and the epsilon 0 is 8.86 into 10 to the power minus 12. So if we substitute all these values, so velocity is 1 into 1.6 10 to the power minus 19 square divided by 2 into 3.14, that is 1 into 6.63 10 to the power minus 34 into 8.86 into 10 to the power minus 12. All these are the standard and constants, है ना? जो भी वैल्यू है वो सब कांस्टेंट्स है. इट मीन्स कि combination of constants is another constant, and if you solve, then this value is 2.18 into 10 to the power 6 meter per second. This is the velocity of electron in the hydrogen atom. ठीक है? तो इक्वेशन क्या हो गया? 5, और दिस इक्वेशन इज 6. दिस इज द इक्वेशन 6.
Now, after the calculation of radius and velocity, we have to calculate the energy. For the moving object like electron, the energy is sum of kinetic energy as well as potential energy. So, you can see this E is equal to kinetic energy plus potential energy. So, this is equation number 7. What is kinetic energy? That is 1 by 2 mv square. And the velocity is from equation 6. So, you just square the equation 6 and multiply with m by 2 will get the kinetic energy. So, this is 1 by 2 m and v square, that is z square e to the power 4 upon 4 pi square n square h square into epsilon 0 square. This is the kinetic energy. And the potential energy is Z square 4 pi epsilon 0 r. From the Coulomb's theory, the potential energy Q1 Q2 upon r with multiply k, that is 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon r. If r, then it is potential, otherwise if r is square, then that will be the force. Is it clear? Now, in this expression, the unknown quantity is r. R is the radius. R is the radius. So, you put the value of r, that is z e square upon 4 pi epsilon 0, and this r is z n square h square epsilon 0 z m e square, that is z m e square. Now, this potential energy will be either negative or positive. What will be the case in this way? It is negative or positive? It is negative. Why it is negative? We will discuss just after a few seconds. Now, here ZE square into ZME square. So, you have m z square e to the power 4. This is 4 pi n square h square epsilon 0 square. This is Pe. So, this equation is 7, here it is 8, this equation is 9. So, from equation 7, putting the value E is equal to z m z square e to the power 4 upon 8. This is 2 and here it is 4. 8 pi square n square h square epsilon 0 square and in this case plus minus mz square e to the power 4. This is 4 pi square n square h square epsilon 0 square.
So you see कि most of the parameters are common. You may take it. So m z square e to the power 4, 8, this is v square, no? There is a 1 pi over here. So this multiply pi square. So this is pi square n square h square epsilon 0 square 1 by 8 minus 1 by 4. The common is 1 by 8 minus 1 by 4. How much it is? Is it minus or negative? Plus? Minus. How much? 1 by 8. Minus m z square e to the power 8 pi square n square h square epsilon 0 square. This is E and this is equation number 10. Now you can take the ratio of equation 8 and 9. What will be the value? Ratio of equation 8 and 9. This is equation 8 kinetic energy, equation 9 potential energy. दोनों का रेशियो क्या होगा? दोनों का रेशियो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी is equal to 1 by 4 or 1 by 8, that is 2, that is minus 2. The ratio is minus 2. मतलब kinetic energy is equal to minus 2 time of potential energy. Is it clear? So if you plot this one, वो स्क्वायर हो गया ना वेलोसिटी का. If you plot this one, here it is the R and this is the positive node and there is a negative energy. So both the expression vary with respect to R. Remaining terms are constant. Remaining terms of constant 1 upon R. K proportional to 1 upon R and P proportional to 1 upon minus, right? And twice as well. So whatever we plot this potential energy, say suppose this is our potential energy curve PE. This is our potential energy curve and at a particular radius, R, this value is P. So what will be the value of K at that particular R? 2P with minus of 2P. P is already minus. So minus 2 minus P is plus 2P. So K is equal to whatever this value is
the value is equal to something like K. So this one is the kinetic energy. This one is kinetic energy. ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए. ठीक है, सो यू फाइंड E इज माइनस, है ना, E is minus. So this minus is, if you E is minus, then this minus will be how much? It depends upon the various constant M, Z, E, 8, pi, N, H, epsilon. And again, if you are taking the same constant here, if you are taking the same constant here for the hydrogen atom, and Z is equal to 1 and N is equal to 1, Z is equal to 1 and N is equal to 1, then this value will be minus 13.6 electron volt. So for hydrogen atom, this E is equal to minus 13.6 electron volt. E is equal to minus 13.6 electron volt. It means that there is some where here the value is minus 13.6 electron volt energy. And this particular value is known as binding energy of electron in hydrogen atom, because this electron is bounded by the nucleus by the energy. So it is known as binding energy of electron in hydrogen. In hydrogen. You see, in this case, we take N is equal to 1. We take N is equal to 1. If it is not 1, if you remain it as, so this will for N is not equal to 1, then En is minus 13.6 electron volt upon N square. If not equal to 1, फर्स्ट ऑर्बिट नहीं है, फर्स्ट ऑर्बिट नहीं है, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? एनर्जी की वैल्यू सपोज n इज इक्वल टू 2 हो जाए, n इज इक्वल टू 2 का मतलब कितना होगा? 2 स्क्वायर 4, तो 13.6 डिवाइडेड बाई 4 3.4 है ना. फॉर n इज इक्वल टू 2, E2 इज इक्वल टू माइनस 3.4 electron volt. So this value is minus 13.6. For n is equal to 1, so something this one is minus 3.4 electron volt for n is equal to 2.
Is it clear? So what is the position? If it is n is equal to 1, so this will be n is equal to 2. This will be n is equal to 2. So this value is minus 13.6 electron volt. So this will be minus 3.4 electron volt. So when n will increase, what about energy? Energy will negative 3.4 is less than or greater than negative 13.6. लाइन में बताया जा रहा है, ग्राफ है ना, ग्राफ में ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू? 0. मतलब n इज इंफिनिटी, n इज इक्वल टू 1 2 ऊपर चला जाए इंफिनिटी, तो व्हाट इज En? -0. Is any difference between -0, 0 or +0? 0 minus 0 and 0 plus. Is any difference? Yes, it is big difference. Mathematically you feel it is not so, but physically it has tendency. Whether you are approaching from positive type, from positive side to 0 or from negative side to 0. When it is -0, it means you are coming from lower energy to higher energy. When it is +0, you are coming from higher energy to lower energy. And this was the basic concept that has been defined in case of potential energy, either in gravitational field or in electrical field or in atomic physics. वर्क डन कैसे डिफाइन करते हैं? किसी वस्तु को अनंत से वहां तक लाने में किया गया कार्य डिफाइन करते हैं ना. अनंत क्यों? वही, इट इज इंफिनिटी, बिकॉज एट दैट टाइम, एट दैट इंफिनिटी, द एनर्जी विल बी 0. 0 से यहां पे ले आ रहे हैं वर्क डन, या वर्क डन बाय द सिस्टम. ठीक है? तो बहुत बड़ा अंतर है, -0 माइनस 0 एंड 0 प्लस. क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्शनलिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है, किस तरह से 0 पे गए आप. एंड व्हेन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 0, when the energy of electron will be 0, then it is free electron. It is free electron. When energy of electron is 0, then it is free electron. Free electron means material is conductor. Free electron means material is conductor. So when you define conductor, insulator and semiconductor, then clearly stated as when there are free electron. Free electron means the electron is not bounded. Free electron means electron is not bounded. इलेक्ट्रॉन बाउंडेड कब होगा? जब उसकी एनर्जी निगेटिव होगा. जब उसकी एनर्जी निगेटिव होगा. और इसका मतलब यह हुआ कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां है, इसको फ्री कराना हो तो कितना एनर्जी देंगे? जितना निगेटिव वैल्यू है उतना दे देंगे. ये द सेम कर्व, यही कर्व यूज किया जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड में. ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के ऊपर कोई सैटेलाइट है और उसको इतना ऊर्जा दीजिए कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर हो. ठीक है? तो वहां पे हम ये कहते हैं कि यदि कोई सैटेलाइट है
और उसको इतना एनर्जी दे दीजिए, एनर्जी मीन्स वेलोसिटी, कि ये इसके फील्ड से बाहर निकल जाए, तो उस वेलोसिटी को क्या कह देते हैं? एस्केप वेलोसिटी. You are providing the energy for that particular system. escape होने का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया. सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी दीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर निकल जाए, है ना? मतलब हुआ कि ये मान लीजिए एक एटम है और उसको एनर्जी दे दी आपने, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ये हो गया, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल रहा है आयन के फॉर्म में आ गया. सो इट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉट बाउंडेड विद द पर्टिकुलर रिमेनिंग पार्ट, दैट इज आयन. आयन से अलग हो गया. तो आप दोनों के बीच की सिमिलरिटी देख रहे हैं. ग्रेविटेशनल फील्ड में भी लाइट को बाहर निकालना है तो यू आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी. वहां पे टर्म बदल जाता है, वहां पे टर्म बदल जाता है तो हम उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी. यहां पे टर्म बदल जाता है, हम कहते हैं कि ये आयनाइजेशन एनर्जी है. आयनाइजेशन एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं? दिस डेल्टा इज आयनाइजेशन. द एटम इज कन्वर्टेड इनटू आयंस. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. इसी में यदि ये प्लस है और आपने एनर्जी दिया और फिर हो गया तो इसको क्या कहते थे? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, तो इसका भी वही कॉन्सेप्ट है. एंड दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द डिस्कशन. तो ये हो गया एनर्जी का कॉन्सेप्ट. ठीक है, now we have to discuss about the last hypothesis of Bohr's, that is energy exchange. अभी क्या हो गया? एनर्जी निकला, अब एनर्जी एक्सचेंज. हाँ हाँ यस हाँ, यहां पे ये अच्छा, तो वो वहां तो मिट गया है, तो वहां भी चेंज कर लीजिएगा. आ गया? ठीक. तो next is fourth, that is energy exchange. Energy exchange means E2 minus E1 is equal to N H nu, है ना? N H nu. This is the energy E2, this is energy E1. यदि हम जनरलाइज कॉन्सेप्ट ले, जनरलाइज कॉन्सेप्ट मीन्स इनिशियल स्टेट और दिस इज योर फाइनल स्टेट. इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट. तो इसको हम कह देंगे EI और इसको कह देंगे EF. जनरलाइज कंसेप्ट, नॉट पर्टिकुलर 1 and 2 in case of hydrogen or any other atoms. That will be expression of EI mz square e to the power 4 upon 4 8 pi square n square h square epsilon 0 square, है ना? So for initial and
final state energies are expressed as कैसे? EI is equal to minus mz square e to the power 4 upon 8 pi square n square h square epsilon 0 square. ठीक है, 8 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एच epsilon 0 स्क्वायर. और एक्सप्रेशन नंबर क्या हो जाएगा? कितना हो गया? 10 हो गया ना, 11. एंड ई फाइनल इज माइनस एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर n square h square epsilon 0 square. This is 12, इक्वेशन 12. तो एक्सचेंज कब होगा? या तो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आए तो इमिशन होगा, लोअर स्टेट से हायर स्टेट. लोअर स्टेट से हायर स्टेट में एब्जॉर्प्शन होगा. तो लिखेंगे फॉर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी वी हैव, क्या होगा? ई आई माइनस ई एफ या E F minus E I, whatever you feel. So this is minus m z square e to the power 4 upon 8 pi square h square n square epsilon 0 square minus of minus m z square e to the power 4 upon 8 pi square n square h square epsilon 0 square. Now this is I and this is F, Ni and Nf. For the common parameters that is present in both the expression are taken out. So this is minus and minus plus. So you have, this is mz square e to the power 4 upon 8 pi square h square epsilon 0 square 1 upon n f square minus 1 upon n I square. है ना? And this is your delta E. And this must be equal to h nu. This must be equal to h nu. And this is hc by lambda. है ना? So you can have this one hc by lambda is equal to m z square e to the power 4 upon 8 pi square h square epsilon 0 square. This is 1 upon n f square minus 1 upon n I square. So for this particular parameter, that is wavelength,
that is 1 by lambda. 1 by lambda is m z square e to the power 4 upon 8 pi square h square epsilon 0 square and hc, that is ch cube. That is ch cube. And inside the bracket 1 upon nf square minus 1 upon ni square. है ना? For hydrogen atom, that is z is equal to 1, n is equal to 1. Z is equal to 1, n is equal to 1. This is 1 by lambda is equal to m e to the power 4 upon r because n is changing, n is not 1, ni, nf इनिशियल और फाइनल, तो n का मान एक फिक्स नहीं कर सकते, ये वेरी कराएंगे और वेरी कराने से क्या मिलेगा? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम मिलेगा, लाइमन, बामर, पार्सन सीरीज, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो ये होगा 8 पाई स्क्वायर सी एच क्यूब एप्सिलॉन 0 स्क्वायर 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर, or 1 upon lambda is equal to, this is r is Rydberg constant, or 1 upon nf square minus 1 upon ni square, and this equation is 12, here it is 13, this is 14 and this is 15. And what is R? R is equal to this much. R is Rydberg constant. R is Rydberg constant, and the expression of Rydberg constant is Rydberg constant is m e to the power 4 upon 8 pi square c h cube epsilon 0 square. These are the Rydberg constant. Again, in this expression, all the parameters are constant. By substituting the constants, you will get this is 1.09 into 10 to the power 7 meter inverse. By substituting the various values, you will get this value. R, 1 by R is equal to 1 upon 1.09 10 to the power 7 meter inverse is equal to 912 angstrom 1 by R. (912 angstrom), that is 1 by R. ठीक है? तो इस एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन नंबर 15 में, यदि n1 का मान 1 हो जाए, n1 का मान 1 हो जाए और nf का मान 2 हो जाए,
तो क्या होगा वैल्यू इसका? एग्जाम्पल, when n1 is 1 and n2 is equal to 2, तो 1 by lambda is equal to 1 by r, तो r is equal to 9 and 12, 1 by 4 minus 1, 1 by 4 minus 1, so that is minus 3 by 4. This is minus 3 by 4 into 9 and 12, 1 by lambda. So what is lambda? Lambda is 9 and 12 into 4 divided by 3. So how much it is? 304 multiply 4, 12, 16. Lambda is 1216 angstrom. हाँ 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 हाँ, तो 1 by lambda भी तो है। जब lambda करेंगे तो ये 1 by r हो जाएगा। बैठ लो बैठ लो बैठ लो, अभी टाइम जो है ना तुम्हारा बाहर का हो गया है, कमरे में नहीं है। तो 1 भाई आप इसको देखिए, आप इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इंफिनिटी कर दीजिए, n इज इंफिनिटी, n फाइनल इज इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा? 0, 1 upon infinity is 0, तो 1 by 1 that is 1, तो 1 by lambda is equal to r, 1 by lambda is r, तो what is lambda? Lambda is 1 by r, that is 9 and 12। यानी इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से इंफिनिटी तक जाना हो, इंफिनिटी तक का मतलब कि आयनाइज्ड, इंफिनिटी का मतलब आयनाइज्ड। If you want to ionize the hydrogen atom, then what kind of wavelength is required? 912. 912. This is the ionization wavelength for hydrogen atom. और यदि 1 स्टेट से 2 स्टेट में भेजना हो तो कितना होगा? That is 1216, this value. ठीक है, इतना वेवलेंथ दे। Here it is n is equal to 1, this is n is equal to 2, तो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में भेजना है, तो यहां से जो वेवलेंथ जाएगा वो कितना होगा? The lambda is equal to 1216 angstrom। ठीक है, और माइनस में क्या नीचे आ जाएगा? यदि n is equal to 2 to 1 हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है और वहां से ग्राउंड स्टेट में आ जाए, ये तो क्या होगा? वेवलेंथ यहां से निकलेगा, उसकी वेवलेंथ की वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा इज इक्वल टू 1216 एंगस्ट्रॉम। इज इट क्लियर? आप क्या चाहते हैं? एक्साइटेड स्टेट में है तो नीचे की तरफ आएगा, कुछ भी हो उससे। आपको एनर्जी बताना है कि हायर एनर्जी से लोअर है कि लोअर से हायर है,
तो लोअर से हायर है तो लोअर कम हो गया, हायर ज्यादा है तो यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी, दैट इज केस 1, दैट इज केस 1. लेकिन आइदर इट इज केस 1 और केस 2, the value of wavelength will remain same. The value of wavelength will remain same. Is it clear? So this is the Bohr's theory. In Bohr's theory, we have 4 postulates: circular orbit, stationary orbit, non-radiative angular momentum, or transition of energy. On the basis of this, we have calculated Bohr's radius 0.53 angstrom, velocity 2.18 10 to the power 6, and energy minus 13.6 electron volt. So velocity, radius, velocity and energy of electron in hydrogen atom, and by the last postulate we will give the transition, that is spectral line. अब next term पे we will discuss about the Lyman-Balmer passion fruit. Thank you.